chapter under your CDP portion, and hope you all are doing well. And as you know that your exam is going to be conducted in the 20th of August, you have 2 months time to prepare for the exam and qualify the CTET exam so that you can apply for exams, apply for the teachers recruitment exams, recruitment process which is going to be held during this year. And we know there are a lot of vacancies coming up under KVS, NVS, and from your other sectors, that is from your state level teaching jobs, and it may be in central level too. So hope you all are preparing well, and you have 2 months time, and it's very much you have available time so to collaborate with us to make your process, your teaching learning process and your journey fruitful by collaborating with us, that is BPS, Brahmaputra Professional Studies. And if you are liking the session, at least the introduction of the session, do like, share and subscribe BPS channel. So let's start the session, and today's session is a warm welcome to CDP portion, because here we are doing the easiest chapter, that is your chapter 1, and that is nothing else but the concept of development and its relationship with learning. So this is one of the easiest chapter, and it is just a beginning. And after discussing the core concepts related to development and growth and learning, we will do a few MCQs, and these MCQs are the probable MCQs, and at the same time we have mix match. We have jumbled up the questions, and out of these questions there are some of the questions which came in the previous years. So it is very important that you all be attentive in the class. And if you are liking, do like, share and subscribe so that you and other people, that is your friends and relatives, to enjoy the session and get some of the benefits from today's session. Okay? So let's start. As you know, the name of the chapter is a bit lengthier, but it is very easy chapter. This is one of the easiest chapter. So what is the concept of development? Now, what is development? Actually, the concept of development, what it is trying to tell us is that development, what is development? Development is a process. It is a gradual process that starts from the prenatal stage. Prenatal stage means at the time when you are in your mother's womb. So think about the complexity, and at the very grassroots level, at the minimal stage, development is taking place. And we know that from the prenatal stage, development starts and it ends with our death. So you can understand the level of processing of the gradual process of development. But a lot of people have given their own concepts, their approaches and their definitions on development, and we will be discussing the quotations in the question section, in the MCQ section. But before that, prior to that, what we need to do is, what are the characteristics of development? Now, when we speak about the characteristics, development is a process which can't be measured. Actually, it is a combination of qualitative and quantitative development. So it is physical, at the same time it is mental. So we need to understand that development is peculiar. That means it is not measurable, because it is a combination of qualitative and quantitative processing and progression of our own self. And apart from the characteristics, we need to know the types of development. When we speak about the types of development, we get to know that there are 5 types of development. What are they? So let me write it. Number 1 is physical. With physical, we can understand that it is something related with our external looks. Next, we have cognitive development. Then we have socio and emotional, social
Let me write it: social and emotional development. Then we have the fourth stage, that is language development. कॉपी पेस्ट मारा नहीं, कॉपी पेस्ट मारा ही नहीं. Okay, the fourth one is language development. And the fifth and the last one is moral development, which is very important. Okay. ओके नाउ अभी यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि सीटेट के लिए आप लोगों के लिए सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द फर्स्ट 30 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सीडीपी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को हिंदी और हिंदी, दैट मीन्स लैंग्वेज 1, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, तो वो लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में भी एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस विल बी कमिंग, विल बी बेस्ड ऑन सीडीपी. So you need to understand, you need to have a cordial relationship with the student, and the relationship of the teacher and the student is going to matter here. And so we need to be very much healthy in our own mindset in order to answer these questions, because these questions are very practical and these questions are applicable with our own real life. So psychological, from the psychological point of view, if we understand development here, these are the 5 stages of development. ये है 5 stages, जो stages हमको बोलते हैं कि what is development and what is the qualitative and quantitative progression of development. Okay. Now in the first one, physical, from the physical concept of development, we understand that it is the external or the things which we can notice in our physical growth, in our we can say in the process in which we express our thinking, our intellectual power. Okay. Next we have the cognitive thing. Cognitive is nothing else but it is related with intelligence. Okay. So जब कभी भी आप लोगों को ये cognitive word मिलेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा this cognitive is nothing else but cognition, and cognition मतलब समझना. Okay, समझना, that means we can also have another word related with this is perception. Okay. So perception हो गया, cognitive development. Third, we have the social and economic development. This development or this stage is very important because we are social animal. हम लोग क्या है? हम लोग social animal है, and we need to stay and we need to adapt with the society and with the environment that we are living in. So it is very important that development, the developmental process or the gradual process of our adjustment with the society, with the economical development, with the economic environment and social environment is very necessary for our development, which is actually going to express our own intellect, our own internal behavior, our own psychological mindset or concept. Okay. Apart from that, language development is important because we need to have a cordial relationship. हम लोगों के जो language, जो भाषा हम लोग use करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग slang use करते हैं. We use a very moderate language where we can cooperate with the outside world, with the external world. हम लोग कैसे किसी के साथ सामाजिक तरह से जोड़ते हैं अपने आप को with the help of our language. And as we know that language is the only medium to express our own internal feelings, we need to adapt a language which is to be a cordial, which is going to be colloquial language होना चाहिए. And the last one is moral development. This comes in the 5th stage, or it is one of the 5th stage of development, but it is also important for our entire process of development. Why? Because it is the development where we need to know about ethics. Okay. Ethics मतलब क्या? वैल्यू एडेड एडुकेशन. आजकल के बच्चों को हम लोग के स्कूल्स में वैल्यू एडेड एडुकेशन, दैट मीन्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन को ऊपर तक. ओके, यू कैन सी वैल्यू एडुकेटेड
education. Value added education is very important nowadays because there is degradation of ethics nowadays. People are becoming very much materialistic, we can say mechanical. हम लोग जंत्र के जैसे हो गए, हम लोग machines के जैसे हो गए हैं, और in this process हम लोग जब अपने काम को सुलझाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, इसी दौरान हम लोगों ने क्या खोया है, from a gradual process from generation wise or from the experiences, हम लोगों ने खोया है अपने ethics को. So it is very important nowadays to add value education, or we can say moral education, in our education system, because the children who are going to be the future citizens, they need to have knowledge about how to respect, how to obey, how to have or inculcate some of the moral behavior, some of the discipline, etiquette, mannerisms, obedience. These are the features, these are the characteristics which one should have in order to deal with life and with the upcoming. ओके, हर्ष कुमार, अच्छा, हेलो हर्ष, आपने दिया है, कैसे हैं आप? ओके, हम तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, जबरदस्त है, मस्त है. ओके, हर्ष, हम लोग जबरदस्त है, आप कैसे हैं? और आपने आज जैसे ही सेशन को ज्वाइन किया है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक थम्स अप दे दिए, कि लाइक्स दे दीजिए कि सेशन कैसा लग रहा है. ओके ओके, देन what I was telling about is moral education. इसीलिए हम लोगों को क्या है, moral education देना, बच्चों को देना, और हम लोगों को खुद को भी moral education, as teachers we need to understand what is the importance of moral education in this contemporary society. अभी के ज़माने में moral education कितना ज़रूरी है बच्चों को देने के लिए, and at the same time being teachers we also need to understand the moral education क्या है और इसकी ज़रूरतें क्यों है अभी. ओके, अच्छा, हर्ष भी जबरदस्त है, मस्त है. तो ये सेशन है हम लोगों का हर्ष सीडीपी के ऊपर, दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आप लोगों को, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. सो ये है आप लोगों का सीडीपी, दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ये है आप लोगों का सीटेट के लिए. और अभी अगर आप टीचिंग के बैकग्राउंड से है और आप सीटेट में अप्लाई कर चुके हैं, देन इट्स गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू. ओके, ओके, मैं यही पढ़ा रही हूँ, सीडीपी चैप्टर 1. ओके, now you have understood the stages of development. Then we will be coming with the concept of growth. Okay, now growth kya hai? What is growth? Growth is actually related with our physical development, or we can say the process from where it is. This also starts from the prenatal stage. हम लोग जब अपने माँ के कोग में होते हैं, तभी से ये stage start हो जाता है, along with the process of development. Growth and development together it goes on. But at the same time we will say that there is a vast difference between growth and development. Growth kya hai aur development kya hai? Development is very much, we can say that it is about the mental development, which is related with the quality of our development. But growth is something which is very quantitative. That means हम लोगों के physical growth, कितना ऊंचा हुए है, कितना मोटा हुए है, कितना बड़ा हुए है, that depends on growth, and that is a process which gradually ends up at a stage after the age of adulthood. So after adult हम लोग और बड़े नहीं होते, और लंबा नहीं होते, और चौड़ा नहीं होते हैं, but growth at the same time goes on. But the growth which happens after adulthood can be seen with gray hair, बाल पक जाते हैं, हम लोगों का स्किन थोड़ा खराब हो जाता है, उसके बाद हम लोगों के बोन्स श्रिंक करने लगते हैं, and at the time we enter the stage of old age, slowly and gradually. So we can understand that growth and development, both of them are very different from its processes. Okay,
So we have understood this. Then we come to the factors responsible for growth and development. So there are a few important factors and these factors are the 6 factors. That is, हम लोग factors, ये हम लोगों को रब करना पड़ेगा अभी, नहीं तो otherwise we don't have space in the board. Okay, so what happens here is, let me clean everything. Okay, अभी factors क्या क्या है? So we need to know the factors of growth and development. The first factor is heredity. Okay, the first factor is heredity. और heredity से हम लोग क्या समझते हैं? Something which comes from our biological concept, or we can say which has gone through posterity from the forefathers, or we can say from our predecessors. That means हम लोगों के ग्रैंडफादर से हम लोगों को मिले हैं, उसे बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी. ओके, हर्ष समझ में आ रहा है आपको? आप सीटेट में अप्लाई किए हैं? ओके, then we need to know about the second factor, and that is environment. Okay, environment is very important because हम लोग कैसे एक परिवेश में है, we are settling in a city or we are settling in a rural area or we are settling by a mountain or plains or deserts, depends. So environment is very important in order to improve, or we can say in the diversification of development and growth. Okay, the third one is nutrition. न्यूट्रिशन हम लोगों को क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड टू बी हेल्दी मेंटली एंड एट द सेम टाइम फिजिकली. सो हम लोगों को न्यूट्रिशियस खाना खाना जरूरी है एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू express, or we need to coordinate our energy in the proper manner. That means we need to coordinate our energy in the proper way in which it can be fruitful or it can give us something in reply, so in return. So ऐसे process से क्या बनता है? In this way what we can understand that nutrition, खाना पेट भरना जरूरी नहीं है, but at the same time खाने को न्यूट्रिशियस बनाना जरूरी है, न्यूट्रिशियस फूड खाना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, साग सब्जी, फ्रूट्स, फल, उसके बाद बादाम, उसके बाद दूध इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद मछली, अंडा, मीट एटसेट्रा फॉर द नॉन वेज पीपल. ओके, so we have a list of food items which can give us nutrition: vitamin A, say vitamin C, vitamin B, vitamin D, etc, etc. Okay, so in that way it is very important. Apart from that, we need to know about the fourth factor, and the fourth factor is sex. यहां से हम लोगों को क्या पता चलता है? सेक्स यहां समझाते हैं कि वी आर मेल और फीमेल. ओके, मेल फीमेल के ऊपर, on the basis of being a girl or a boy, it is very important that development takes place in a different way. तो एक लड़की के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग होगा एंड एट द सेम टाइम फॉर अ बॉय इट विल बी डिफरेंट. ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी? Then we have the fifth one, that is early stimulation. Okay, in early stimulation what we understand that environment, that means हम लोगों का घर, हम लोगों का स्कूल और इंस्टीट्यूशन और कॉलेज हम लोगों को कैसे सपोर्ट करते हैं हम लोगों के डेवलपमेंट में. सो इसी तरह हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों का घर, रास्ता, स्कूल, सोसाइटी हम लोगों को बहुत सारे हेल्प करते हैं in order to develop, in order to grow up. Okay, and then the sixth one, that is the last stage, that is child rearing practice. So this is rearing matlab how you are brought up. Okay, rearing matlab how you are brought up. Brought up matlab आप लोग कैसे पले बड़े गए हैं.
आप लोगों के पेरेंट्स, आप लोगों के फैमिली मेंबर्स आप लोगों को कैसे बड़े किए हैं. So depending on that, we need to understand that rearing process, child rearing is also important in order to bring out fulfilled results in the child in respect to development and growth. Okay. And the last we come to know about the relationship of learning with development and growth. Abhi, this is very simple. कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अगर अच्छी तरह से हो रहा है दैट मीन्स लर्निंग भी अच्छा ही होगा, पढ़ाई भी अच्छी ही होगी और शिक्षा भी अच्छा ही होगा. और अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है दैट मीन्स you understand that learning process is also going to be deficient or it is not going to be up to the mark. जो level होना चाहिए था वो level नहीं बन पाएगा because there is no proper growth, no proper development. So in this we understand that growth development is resulting to what it has the outcome in learning. तो अगर growth अच्छा है, development अच्छा है, then that means learning भी अच्छा होगा. So these are the core concepts from this chapter 1 and after this we are going to do a few questions. Okay. So ये समझ में आ रहा है आप लोगों को और आप लोगों ने I hope that you all have written from the board. आप लोगों ने jot down कर लिया है अपने rough copies में whatever I have said about the types of development and at the same time the factors responsible for growth and development. Okay. हर्ष आप चले गए, क्लास नहीं कर रहे अभी? Okay. Okay, after this we will be doing a few questions. Now the probable question number 1. Question number 1 में क्या दिया है? Development starts from dash stage. Is it prenatal or postnatal? That means natal आप लोगों को क्या समझाता है? That means you are referring to natal मतलब womb. Womb मतलब माँ के कोग में. तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्री नेटल स्टेज में ही जैसे मैंने बताया है आप लोगों को दैट डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल स्टेज. दैट मीन्स आपके माँ के कोख से ही आप लोगों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. ओके. नेक्स्ट, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ अ चेंज ऑफ बिहेवियर और आउटकम ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पे क्या होगा? बोथ होगा बिकॉज both of them helps us to understand that learning is nothing but it is a change of behavior. हम लोगों का behavior static नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, behavior change होते रहते हैं and on depending on what? Depending on our experiences. हम लोग क्या experience करते हैं उसके ऊपर बेस करके हम लोगों का learning change होता रहता है, learning हम लोग सीखते रहते हैं. So we understand that these two are the processes in which we understand that learning is the outcome of experiences and the change of behavior. Next, human development is based on which principle? Is it reversible or progressive? Reversible मतलब back होता है या आगे जाता है? So definitely it is progressive. हम लोग आगे जाते हैं development में. So the correct answer is progressive. Okay. These are very simple questions, but at the same time, it's going to confuse you in the exam hall. और because अब क्या है? पिछले साल से एग्जाम क्या हो गया है? CBT बेस्ड हो गया है. That means computer based टेस्ट. So आप लोगों को एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर जहाँ पे पेपर मिलता है, पेन पेपर वहां से गोल करना पड़ता है, वो सर्कलिंग सिस्टम नहीं है. अभी क्या है? कंप्यूटर में आप लोगों को टिक करना पड़ता है. इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एटलीस्ट देयर विल बी सम ऑफ द कंफ्यूजन्स. आप लोग थोड़ा बहुत एग्जामोफोबिया हो जाता है, डर लगता है और इसके वजह से क्या होता है? आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. ओके. एंड देयर आर नेगेटिव मार्किंग्स, आई एम टेलिंग यू. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स. ना कॉग्निटिव वर्ड से ही आप लोगों को बहुत डर होता है एंड कॉग्निटिव इज नथिंग एल्स बट इट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. Okay, as I have already said that cognitive is nothing else but it is related with intelligence. Next we have question number 5, which is the age of storm and stress. This is very important question and it's going to come a lot of things.
It is actually, this storm and stress concept is frequently asked. It is frequently asked in the exams. It is FAQ, I can say, frequently asked question, that storm and stress का stage कौन सा है, जहाँ पे आप लोगों का stage कैसा है, मतलब तूफान आने वाला stage है, और वो stage हम लोगों को identify करता है, that is nothing else but the stage of adolescence. Okay, adolescence is the stage where we can understand that it is the stage of storm and at the same time stress. आप लोगों को stress भी feel होता है और आप लोगों को storm जैसा feel होता रहता है आपके मन में, आपके दिमाग में, everywhere. Okay. So now you have understood question number 5. It's very important. Then we have question number 6. The most appropriate meaning of learning is. Learning का appropriate meaning क्या है? Is it acquisition of skills or modification of behavior? So we will understand that both these things, both of these are important for learning because we have acquisition of skills. हम लोग skills भी सीखते हैं as we learn. Skills मतलब नए नए तरीके के processing of learning. And at the same time modify क्या होता है, हम लोगों का behavior. Modify मतलब change या फिर हम लोग बोल सकते हैं improvement of behavior. Okay, सुलझना या फिर अच्छा होना behavior का. So both of these are important. Then we have question number 7, that is language is very important for one's development. It depends upon. So language किसके ऊपर? Language तो important है ही. हम लोगों को पहले एक affirmative question दिया, sentence दिया गया है जहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि language is an important factor for development. लेकिन ये language depend किस पे करता है? Better schooling or better socio-economic development. तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे. सो बोथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लैंग्वेज हम लोग कहाँ कहाँ सीखते हैं, लैंग्वेज के हम लोग कैसे अपने अंदर के अपने एक्सप्रेशंस को, कैसे इंटरनल फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे सीखते हैं वो लैंग्वेज के माध्यम से. वो है जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हम लोग घर से बाहर निकल के किसी दूसरे आदमी के साथ संपर्क करते हैं, बात करने चाहते हैं, अपने आप के फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं, उसी तरह से हम लोगों अपने लैंग्वेज को डेवलप करते हैं. सो लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस विच वी अंडरस्टैंड इन द स्कूल इटसेल्फ, इन द सोसाइटी इटसेल्फ, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों के घर में तो है ही. सो घर वहां पे एक बेसिक यूनिट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन द स्कूल, इन कॉलेजेस, इन द market, everywhere. Okay, next we will be moving on to question number 8. Who said learning is a gradual process? Now learning is a gradual process, ये किसने बोला था? अभी CDP में क्या होता है, एक या दो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे किसने क्या बोला वो लर्न करना पड़ेगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न हु सेड व्हाट. सो यहाँ पे लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दोनों ने बोला है, बट लर्निंग के बारे में थॉर्नडाइक ने बोला है. सो इट इज कंफ्यूजिंग. थॉर्नडाइक ने लर्निंग के बारे में बोला था दैट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और हर्लॉक ने डेवलपमेंट के बारे में बोला था. सो बच्चों आप लोग ये गलती कर सकते हो कि कौन सा हो सकता है, आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल डेवलपमेंट. सो मॉरल डेवलपमेंट इज व्हाट? इज इट वैल्यू एडेड एजुकेशन और वैल्यू एडेड लर्निंग? सो हम लोगों ने बोला था मॉरल एजुकेशन क्या है? इट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आवर एथिक्स, of our behaviorisms, of our mannerisms. So सारे चीज जो हम लोगों के व्यवहार को उन्नत करते हैं उसे बोलते हैं द मॉरल एडुकेशन. मॉरल एडुकेशन अभी क्यों जरूरी है? बिकॉज वी आर डिग्रेडिंग इन आवर बिहेवियर, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रिलेट विथ समवन. तो ये रहने के लिए, ये अगर हम ये स्थिति हम लोगों को सुलझाने के लिए हम लोगों को वैल्यू एडुकेशन बच्चों को देने हैं, और ये बहुत जरूरी है अभी के सिस्टम में, अभी के एजुकेशन सिस्टम में. देन वी हैव व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो बेसिक डेवलपमेंट, मिनिमल डेवलपमेंट, इज इट जनरल और स्पेसिफिक, or is it physical and mental? So we will be going with option B, that is physical and mental. That is the very specific or basic, we can say basic difference between
development and growth. Okay, with this we come to the end of today's session. Okay, with this we come to the end of this session and hope you are liking the session, and if you are liking, do like, share and subscribe BPS seated classes that we are starting here, and we are very much इंक्विजिटिव फॉर योर कोलैबोरेशन. दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों के चैनल को, और यहाँ के जो सर्विसेज है, हम लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर is going to be nurtured only when you avail it. Okay, so best of luck for your preparation, and I will meet you in the next class, which will be in the next week. So I will be coming with more important questions and discussions which related with the chapters. So with this, we come to the end of this today's session and hope you all keep preparing. Thank you for being with us throughout the session.